All right, ladies and gentlemen, Bharani Nakshatra. It's a second nakshatra in the nakshatra belt system, and it is one of the most powerful nakshatras. I'll be very honest with you. And let me share my whiteboard and let me give you my intakes, my experience on Bharani, and you can relate to it. So, ladies and gentlemen, before you understand Bharani, you have to understand the meaning of the word Shiva. You must understand what is Shiva. See, when I started knowing about Shiva, and obviously the source is Shiv Mahapuran, and when you read and when you try to understand Shiv Mahapuran, you understand the real meaning of your life. That what exactly is life and how you should lead this life, and what is life and what is death. I mean, what is rebirth? What happens when you die? What happens when you reborn? What are the karmas that you should do? How Shivling puja has to be done? How Devata puja is supposed to be done? What should be your daily routine? All these things are there in the Puranas. So Puranas give you detailed information of these activities that you're supposed to do every single day. So the word Shiva is basically, the meaning of the word Shiva is auspicious. Okay. And this word Shiva has two parts. Okay. The first, just you have to remove is the E from it. So if you remove E from it, it becomes Shava. And Shava is nothing but it is a dead body, it doesn't have a soul. Okay. Purana says मृत्यु शरीर वही है जिसमें आत्मा नहीं. That's it. और कुछ नहीं है. There's no difference. It's like you take off your one cloth and you wear another cloth. So if you look at this E, look at this E very carefully. Look at this E. Isn't it's like a shivling? It's like a shivling, right? E. And the word E, the meaning of the word E in the shastras is Shakti. Okay. So what is Shiva? Shiva is combination of Shakti and Shiva, which becomes Shiv Shakti, which is Ma Gaura and Shiva. And what is Shivling, by the way? Shivling is representation of the male element and the female element. Simple. That is the meaning of Shivling. It's auspicious. And this E is also representation of the word Ma, Mata, because Gaura is a Mata. And Bharani Nakshatra has great connection with Ma, Mother, Mata, which I'll explain you in this very basic lecture of Bharani. And there is a lot of association of Shiva in the Bharani Nakshatra. You see, the first thing the technical thing that I want to tell you about Bharani is that the location of Bharani is 13 degree 20 minutes of Aries to 26 degree and 40 minutes of Mesha Rashi, Aries. The ruling planet as per Vimshotri Mahadasha system is Venus. And the lordship of this particular nakshatra is with Dharmaraj, Yamraj, and Ma Kali. Nobody knows it. Nobody talks about Ma Kali. Ma Kali is also associated with Bharani. A lot of people just say, oh, it is just Yamraj, and they don't know.
that the association of Ma Kali, huge association of Ma Kali with the Bharni Nakshatra. Ladies and gentlemen, Yamraj and Bharni. The meaning of the word Bharni. Bharni का जो actual मतलब है, it is known as yoni. What is the yoni? आपने सुना होगा वर्ड 84 लाख योनियों में के बाद इंसान को ह्यूमन का बर्थ मिलता है. So when they are talking about yoni, they are talking about female uterus. But the biggest mistake that we people make is that we think that it is the female uterus of a human. No, it is a female uterus of every living human being, be it a bird, be it an insect, be it an animal. And that is why Shastra says that there are 84 lakh living beings on this planet. And you go through each and every uterus, and in the end, finally you find a uterus of a human. That is the meaning of 84 lakh yoniya. That is the real meaning of 84 lakh uteruses. To get this body, this brain, this Shakti, to become a student of Jyotisha, you have traveled through 84 lakh different uteruses. And then you have reached here. और यूट्रस में एक चीज तो श्योर होती है कि यूट्रस में इंसान को उल्टा लटकना पड़ता है. Your always head is down. Only few people have their feet down. They live अपनी मर्जी से वो यूट्रस में जीते हैं कि मैं लटकूंगा नहीं. और ऐसे बच्चों को हम कहते हैं कि ये बच्चे उल्टा पैदा हुए हैं. You've seen there are certain deliveries, if you are from medical sciences, if someone, there are certain deliveries जिसमें बच्चे का पैर पहले बाहर आते हैं, बाद में हेड बाहर आते हैं. And it's a very dangerous delivery. Why? There are strong chances कि बच्चे का गला या सिर या हेड चोक हो जाए. Because बच्चा एकदम से बाहर नहीं आता. slowly थोड़ा हेड दिखने लगेगा, फिर हेड हल्का सा बाहर आएगा, फिर एकदम से हेड बाहर आ जाएगा. बॉडी विल टेक सम टाइम, राइट? तो अगर हेड बाहर आता है तो इट इज लाइक ओके, यू नो, there is a process through which you can breathe. But if the feet are coming out first, right, then there are great chances that the बच्चा, the kid may be choked. वो चोक हो सकता है, फंस सकता है बच्चा. बट अगर ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो उल्टे पैदा हुए, आई डोंट नो अगर आप में से कोई उल्टा पैदा हुआ है कि नहीं. Your mother can tell you, doctor can tell you, right? And yes, I was born, you know, with feet come out first. That is there, you know, that's the information my mother and doctor has given me. That I was not hanging upside down, right, when I was born. So I was born with feet coming out first and head later on. So what is the significance of such, if you are born like that? The significance is that if you have problems in the lower back, if you have problems in the lower disc of your body, backbone, this person has to go and place his feet. You lie down and ask this person to place his feet on your lower back, right where the disc is, right where the tail point is. And you do it for 3 days, morning, evening, for just 2, 3, 4 seconds. The disc problem will be permanently gone forever.
And when I was a child, people used to come and take me in their on their scooters and on their cars to take their home, and I just used to go there and put my feet there on their lower back and come back, and people used to get relief immediately. I never knew this, but as a child, I started knowing this. Oh, this is how it happens. So if you have a severe disc problem, right, and you find a child or a human who was born with feet coming out first, you have a solution, 100%. Why is that so? The first exposure to the Shakti is either the head. The head is where your intelligence is, and feet is where the stability is. You stand because of the feet. And what happens, if you have a lower back problem, can you stand? Can you be stable? Why do we use those belts that we use? To keep your कमर स्टेबल. सो उसके लिए अगर आप सिर्फ पांव ही लगवा देते हो ना, जो बच्चा उल्टा पैदा हुआ है उसकी कमर स्टेबल हो जाती है इमीडिएटली. इतनी पावर होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर. दैट्स द पावर ऑफ ह्यूमन. Bharani Nakshatra is the uterus of a female. That is why when you look at the sky, you will find 3 stars like this, the Bharani Nakshatra. And this represents the female uterus. These are the 2 ovaries, the right ovary and the left ovary. And this is the mouth of the uterus, right? This is known as Bharani. And you know what? When you look at yantras, you see something like this, something like this, a symbol like this. Okay, this symbol that you see, an upside down triangle is a symbol of Shakti, Shiv Shakti. Again, this uterus belongs to the female element, Shakti, Shiva Shakti. You should know these things. These are the basic things in Jyotish. So whenever you're making a triangle which is a reverse triangle or an upside down triangle, you are representing Shakti, uterus. And what is there in the uterus, ladies and gentlemen? There's water in the uterus. A child is in the water in the uterus. When the water bag bursts, it is a time for the delivery. That means the water has just come out. And what is the water? The Jala Tattva is the Venus. Okay, Shukra. And it is water related to reproductive organ. It is a water which is related to reproduction. Now, you see, one important thing about uterus is there's a child in the uterus. एक औरत का, एक फीमेल का जो सबसे बड़ा धर्म है वो जननी के रूप में देखा गया है. लेकिन इससे पहले का नक्षत्र क्या है? अश्विनी. अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज वन लाइन डेफिनेशन ऑफ अश्विनी, तो क्या बताओगे? बोलो. Who will give me the one line definition of Ashwini? Come on, just one liner. What is Ashwini? Speak up. Protector. Ashwini is protector. Okay. Ashwini, I'm talking about Ashwini, not Bharani. Ashwini. Healer, Guruji, the planet Nakshatra with healing powers. Okay, what else? Golden chariot of sun god. Golden chariot of sun god. So what is the purpose of a chariot? क्या करता है chariot? Fast moving. Fast moving. Actually, chariot, the meaning of a chariot is that chariot is a transporter. Like Nitika is saying, to carry. Anna? So, Yeah. Ashwini is an energy-giving nakshatra because it is ruled by sun. It have a planet sign. Ashwini is not ruled by sun. Ashwini in the Vimshotri Mahadasha system is ruled by Ketu, and the Devata which is associated is sun.
or the Ashwini Kumaras. Okay. Can you elaborate more on this, please? So spirituality. Spirituality. Okay, see, the one-liner meaning of Ashwini Kumaras is the word that I used was swift. They are actually, they are transporters. They are transformers and transporters. That is why they are represented by horse. And that is why I said, remember in the car, there's a horsepower, is because of that horse. And they like to drive fast cars, and their chariot is very, very fast. So basically, this nakshatra is a nakshatra of transportation. Okay. Now you have to understand what is Ashwini transporting for human. You say, okay, look, but Revati nakshatra, either you get moksha or you get sharira. Listen to this very carefully. Last nakshatra is Revati, 27th. Revati decides whether you get a body or whether you get moksha. You go to Ashwini. Ashwini is a transporter. And the next nakshatra of Ashwini is Bharni. It is very important to understand Ashwini and Bharni. See, when I teach nakshatras, you have to understand like this. कि इससे कृतिका से पहले भरनी था, भरनी ने कृतिका के लिए क्या किया, और अश्विनी ने भरनी के लिए क्या किया, और भरनी ने अश्विनी के लिए क्या किया. You have to understand exactly. See, Ashwini carries the seed of the life to the Bharni. It is a transporter. So the transporter of a sperm, the transporter of a sperm into a uterus needs Shakti, needs a power. I'll explain you more. For an example, Ashwini is associated with Ketu. Ketu is further associated like Mars. People say like Ketu is like Mars. Okay, Mars is what? Mars is what? Mars is sexual energy. All the sexual power is coming from Mars. Okay, so what happens when you have to have a child? Imagine a situation, imagine a headless situation. Imagine a headless situation where you just got so much carried away that there were no precautions taken, and the sperm was transported to the ovary and finally to the egg, and the female got pregnant. To do such acts, you have to stop thinking. When you are at that particular point in life, your thought process is zero. You just do it. And later on, you realize, what have you done? So there's no thinking at that time when that sexual thing is happening. That is coming from Ashwini. That is why Ashwini people, they gave proposal to whom? They gave proposal to Sanjana. Sanjana was who? No, Sanjana or Savitri. There was this wife of Rishi Chavan. Rishi Chavan, has a wife. And there's a story of these Ashwini Kumaras, see, they said, okay, they'll make their husband young. And then you choose the right person. We are very young and beautiful people. And then if you choose whatever out of three will become your husband. So the Sanjana or Savita, I think that was the name. I'm not remembering the exact name. The wife of Rishi Chavan. She chose her husband Chavan only. There's a mythological story. So Ashwini Kumaras are two Kumaras who are so much into their Yovan. They think they're very handsome, very beautiful, and they can do such acts.
And that is because of the nature of the Ashwini, that Ashwini has capability to transport the seed of life in a yoni. Sukanya, yeah, that's the right word. Sukanya. Sukanya means, Sukanya is another name of Ma Saraswati, intelligent. She was intelligent. And Ashwini is a transporter. Question. A very important question. Very important. If you have a problem with female uterus, now listen to me this very carefully, or you have problem with conception, which is the first nearest devata that you should do the prayers to? Come on. Sir, Shukradev. No. Lord Vishnu, Ganpati. If you have problems, Vishnu Bhavan. Lord if you Vishnu, see, if you have Shiva. problems, everyone take कोई नाम रह गया तो वो भी बोल दो. Right? I'm going to give you a secret today. I'm going to give you a secret. आपको एक मैं चीज सिखाता हूँ आज. ये बहुत डीप सीक्रेट है. मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं. आज मेरा मन है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो. आप लोग ज्योतिष भूषण के भी स्टूडेंट हो, वो चीज को समझोगे. देखो, ये हेवन है. ध्यान से देखना इस बात को. ठीक है, ये हेवन है. हेवन में एक छोटा सा गेट लगा हुआ है. ये जो छोटा सा गेट है ना, दरवाजा है, इसमें दो रास्ते हैं. एक रास्ता जा रहा है मोक्ष की तरफ, और एक रास्ता जा रहा है जेल की तरफ, यानी कि बॉडी अर्थ. अर्थ एलिमेंट, मदर अर्थ. जन्म लेना है, लगन मिलना है. इसको बोलते हैं रेवती. ठीक है, यहां से आपका जन्म हुआ. जन्म होके आप आए, ट्रांसपोर्ट होने लगे हो आप, क्योंकि आपके जन्म से पहले भी आप सबसे पहले यू वर स्पर्म ऑफ योर फादर. यू वर अलाइव, बट यू वर इनसाइड योर फादर. लेटर ऑन यू वर ट्रांसपोर्टेड टू योर मदर. याद रखना ये बात. अगर अश्विनी में वो जो सीड ऑफ लाइफ है, उसको जन्म चाहिए या मोक्ष चाहिए, तो वो अपने से पिछले नक्षत्र की तरफ देख रहा होता है. अपने से पिछले नक्षत्र को प्रे करता है, मुझे मोक्ष दो या जन्म दो. इसका मतलब ये है कि अगर किसी को भरनी के साथ प्रॉब्लम है लाइफ में, तो वो कौन से नक्षत्र की प्रेयर करेगा जिससे भरनी ठीक होगा? इमीडिएटली बताओ. Ashwini. Ashwani brothers. अश्विनी. अश्विनी एंड दी देवता एसोसिएटेड, कोई भी देवता एसोसिएटेड है. अच्छा, एक और मजेदार बात बताओ. एंड दिस प्रिंसिपल इज ओनली बेस्ड ऑन जन्म नक्षत्र. ये याद रखना. सो वेरेवर योर जन्म नक्षत्र इज, think of the nakshatra exactly behind it. If your janam nakshatra is kritika, you will think of bharni. So when you think of bharni, you have to pray to Ma Kali to achieve things in life. अगर आपको जन्म नक्षत्र से लेके माइंड एनवायरनमेंट, आपका जो बाहर का एनवायरनमेंट है, उसको लेके आपको जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने से बिल्कुल पिछले वाले नक्षत्र को के देवता को आप प्रेयर करनी शुरू कर दो, उसका मंत्र करना आप शुरू कर दो. यू विल फाइंड रिलैक्सेशन विद इन मंथ्स. आई वुड नॉट से मंथ्स, विद इन डेज.
एक और सीक्रेट बताओ, ऑब्जर्वेशन। अब आप अपने से अगले वाले नक्षत्र में क्या देखते हो? पिछले वाले नक्षत्र में प्रेयर्स देखते हो, आपके जन्म नक्षत्र के अगले वाले नक्षत्र से क्या पता लगता है? बताओ, सोचो, थिंक लॉजिकल। फ्यूचर। नॉट फ्यूचर, नो 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 नो, नॉट अ फ्यूचर। मैंने आपको प्रीवियस नक्षत्र को पास्ट थोड़ा बोला है, मैंने आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर थोड़ा बोला मैंने ऐसा। व्हाट डू यू थिंक द नेक्स्ट नक्षत्र क्या होगा? हमारे बच्चों का नक्षत्र वो हो सकता है। नो, थिंक लॉजिकल। First of all, it belongs to you. It doesn't belong to your children, somebody else, your future or something. You see, मैंने आपको क्या बोला कि आप हेवन से आत्मा आ रही है अर्थ के ऊपर, ठीक है? बच्चा पैदा हो गया, ओके, भरनी में से बच्चा यूट्रस में से बाहर आ गया, यूट्रस में से बाहर आ गया, माँ की गोद में आ गया बच्चा। बच्चे को सबसे पहली चीज क्या चाहिए? फूड। फूड, फूड सबसे पहली चीज चाहिए उसको, फूड। आपको पता है जो जन्म नक्षत्र से आपका जो बिल्कुल अगला नक्षत्र है वो आपका टेस्ट है, वो आपकी फूड हैबिट्स है। याद रखना, किसी के बारे में जानना चाहते हो ना कि उसकी फूड हैबिट्स कैसी होंगी, अपनी फूड हैबिट्स के बारे में जानना चाहते हो, आप अपने जन्म नक्षत्र से अगला नक्षत्र देखो और मुझे बताओ कि उसके साथ प्लेनेट कौन सा एसोसिएटेड है, बताओ। कम ऑन, टेल मी। हाँ, मून। 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 अगर चंद्रमा आपके जन्म नक्षत्र के अगले नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड है तो ऐसे लोगों को लैक्टोज वाली चीजें, एनीथिंग विच हैज मिल्क, दूध, खीर, मिठाई जिसमें दूध हो, राइट, एनीथिंग विच इज मिल्की, क्रीमी, राइट, ज्यादा वो मिर्च मसाला नहीं। सर मिल्क केक बहुत पसंद है। सी मिल्क, सी एग्जैक्टली, आई मीन जिसका जन्म नक्षत्र से अगला नक्षत्र चंद्र का है उसको दूध दे दो आप, वो खुश हो जाएगा। He loves milk, right? He loves milk. He just loves it. अब केतु है ना, अभी अभी दीप्ति बोल रही केतु, हाँ, so what is she saying? Let me see. She's saying माघा नक्षत्र is the next. तो माघा का तो केतु ही है। अब केतु को क्या पसंद है खाने में? ये डीप स्टडी करते हो जब आप ज्योतिष की तो पता लगता है। केतु को अगर कोई चीज पसंद है तो वो एग्स है, एग्स। केतु लाइक एग्स, राइट? और केतु लाइक एनी फूड विच इज फॉरेन फूड, जो अपनी मातृभूमि से हटके थोड़ा सा खाना होगा ना, डिफरेंट सा खाना, राइट? थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे मैंने देखा है कि उसको अगर आप एक ऐसी लड़की को डेट पे लेके जाओ जिसका चंद्रमा अपने जन्म नक्षत्र से आगे केतु बैठा हुआ है, उसको पूछो क्या खाना है तो शी विल से कैन वी गो फॉर चाइनीज टुडे, let's go out, have some Chinese or some Italian, some Italian खाते हैं, Chinese खाते हैं। At times कभी कभी क्या होता है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है ना तो उसको फिश बड़ी पसंद होगी। केतु इज ऑल्सो फिश, she would love fish or he would love fish, और उसको लगेगा कि उसको स्किन अगर अच्छी ब्राइट करनी है ना तो उसको लगेगा कि फिश कैप्सूल से बढ़िया कोई ओमेगा 3 से बढ़िया कोई चीज ही नहीं हो सकती। she'll be very very close to, you ask her, take her to a, to maybe a pharmacy, so बोलेगी यहाँ पे अच्छे से फिश कैप्सूल कहाँ मिलेंगे? You understand? So केतु is like that kind of a food. Suppose किसी का जुपिटर है, like I am born in Anuradha. Anuradha is which? Saturn का नक्षत्र है ना। Saturn के बाद कौन सा आएगा अगला? मरकरी। मरकरी, ज्येष्ठा। हाँ, तो मरकरी को कौन सा खाना पसंद है? ज्येष्ठा। इंद्र देवता को कौन सा खाना पसंद है?
इंद्र देवता को सोमरस बहुत पसंद है, Immortal foods. इमॉर्टल फूड्स, राइट। और सोमरस दारू नहीं होती है, शराब नहीं होती है। सोमरस इज अ स्पेशल water which is prepared by doing several mantras. You know what? And what is the best thing that I like the most? During my daily routine. During my daily routine is when my wife in the morning she does his Durga Stuti every day, keeping a water close to her, and then she give me that glass of water to drink every day. You know, she does Durga Stuti for me every day in the morning. एंड एक गिलास पानी भर के रखती है और पूरा पानी मुझे पिला देती है. Every single day she does it. Every single day without a disconnect. Right? So I think that's I love. I think that's something that I really love. So Mercury would love, but if your Mercury is not well placed, और आपका Mercury अगर अगला है तो आपको शराब बहुत पसंद होगी. So in Kali Yuga, you like cocktails, different types of cocktails you love. You know, you love different type of drinks. अगर आपका मर्करी वेल प्लेस्ड है तो वही चरनामत में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आपका शनि है, जस्ट नेक्स्ट प्लैनेट, तो शनि भी को भी शराब पसंद है. शनि को भरपेट खाना पसंद है. यू नो एनीथिंग लाइक शनि इज अ लेबर. लेबर को क्या पसंद होता है? दाल चावल रोटी भर के, एकदम भर के दो, पूरा एकदम भरा हुआ परात होना चाहिए. उसको नॉनवेज पसंद आएगा. सबसे ज्यादा नॉनवेज पसंद आएगा राहु को. अगर किसी का जन्म नक्षत्र से अगला राहु है तो राहु वुड लव फॉरेन फूड्स. अपने बॉर्डर से, अपने अपने धर्म से हटके जो अगला खाना है, राइट, मतलब नॉट इंडियन फूड. whenever that person will get opportunity, he will choose cheese chili or Manchurian or noodles or fried rice rather than biryani. Is it biryani or a fried rice? It's a fried rice. That's what Rahu says. If Jupiter is like sweet. Jupiter is like sweet. Mars is a food, you know, which is dangerous. Right? Mars is a food which is very, very dangerous. So what is the dangerous food, by the way? Which is the most dangerous food on this planet? No, junk food is not dangerous, Neha. No, spicy. I mean, Indian food is very spicy. The most dangerous food on this planet when you eat in excess is sugar. Sugar. आपको पता है शुगर की एडिक्शन जो है वो कोकीन से भी ज्यादा है. You know that? Why did Britishers introduce white sugar in India? Before Britishers, we never used this white sugar. All we used was jaggery. Never. Britishers have destroyed our country by introducing white sugar. One, they brought diabetes. Second, it is addicted. It is addiction. जो लोग बहुत मीठा खाते हैं ना, उनको बोलो 4 दिन मीठा ना खाएं. They'll feel as if they are dead. और जो लोग मीठा नहीं खाते हैं, actually they are very much away from the poison. आपका अगर मंगल होगा ना, अगर आपका जुपिटर होगा तो आप एक गुलाब जामुन खाओगे, एक जलेबी खाओगे, जो आपको थोड़ा कम नुकसान पहुंचा सकती है. अगर आपका मार्स होगा ना तो आप चॉकलेट खाओगे. चॉकलेट में ये लिखा होता है 45 ग्राम ऑफ शुगर. आपको पता है 45 ग्राम्स ऑफ शुगर में कितने चम्मच चीनी आती है? 6 चम्मच. 25 grams means 3 or 4 spoons of sugar. Mars is a food which is dangerous, like ghee. मंगल घी है. घी अगर आपने थोड़ा सा खाया ठीक है, लेकिन अगर आपने घी बहुत ज्यादा खाया, it will hit your liver. Forget about your heart. हार्ट बाद की बात है. जो लोग पराठे खाई जा रहे हैं सुबह दोपहर शाम, घी 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 खा रहे हैं,
they will get fatty liver. Because of fatty liver, your liver will generate lot of sugar. अगर किसी का फैटी लिवर है ना, तो उसका लिवर अपने आप शुगर जनरेट करने लग जाता है बॉडी में, चाहे आपने मीठा खाया हो चाहे नहीं खाया हो। जिन लोगों की बैठे बैठे शुगर बढ़ती है, उनकी प्रॉब्लम खाने में नहीं है, उनकी प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म में है, उनकी प्रॉब्लम लीवर में है। सोए सोए लीवर आपका शुगर जनरेट कर रहा है। थिंक अबाउट दिस। इफ यू लर्न मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम ये सब पढ़ाते हैं। So if you have Mars, you will eat such foods that are dangerous. ये देखो नितिका क्या बोल रही है, she loves ghee, she loves sugar, these Martian peoples. जन्म नक्षत्र से अगला नक्षत्र अगर मंगल है तो आपको हलवा पसंद होगा। आप बोलोगे घी वाला चीनी वाला हलवा खिला दो, देसी घी की मिठाई खिला दो, पराठा खिला दो, कोई रोटी सब्जी चपाती दही या कोई भी चीज है, कोई आप दाल खा रहे हो उसमें भी घी घी घी, उनके घर में घी की बहार आई होगी। एंड दे विल हैव प्रॉब्लम्स बिकॉज वर्कआउट तो उतना है नहीं। That's where the problem is. See, that's what Viral is saying. Absolutely. ये छोटी छोटी एप्लीकेशंस है नक्षत्रों की, जो मैं आपको आने वाले टाइम में सिखाऊंगा कि कौन से नक्षत्र से कौन से नक्षत्र में आपको जीवन के क्या वर्टिकल के बारे में पता लगता है। What do you learn from a particle vertical from this nakshatra? Interesting, no? Isn't interesting? Very interesting. Will you find this information on YouTube? No. This you will find when you do 3000 horoscopes. When you talk to people, when you understand, oh, अच्छा, when you observe about, ये जो रोज ऑब्जर्वेशन लिखते हो ना, इस ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओ। राइट ऑब्जर्वेशन अबाउट योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, उनके साथ क्या हुआ। आपका कुछ खाने का दिल कर रहा है ना, तो आप देखो कि आज कौन सा नक्षत्र और उससे अगला कौन सा नक्षत्र है। आज आपका वो दिल कर रहा होगा खाने को, अगले नक्षत्र के बारे में। आज आपको नूडल्स खाने का मन क्यों किया, आज आपको बर्गर खाने का मन क्यों किया, आज आपको ड्रिंक लेने का मन क्यों किया। आज आप नक्षत्र देखो अपना और उससे अगला नक्षत्र देखो, उस नक्षत्र के साथ जो ग्रह जुड़ा हुआ है, उस नक्षत्र में जो ग्रह जुड़ा है, उस ग्रह के साथ जो फूड है वो आज आपके खाने का मन करेगा। और एक लाइन में अगर आप उस नक्षत्र को एनर्जाइज करना चाहते हो तो क्या करो, अपने से पिछले वाले नक्षत्र के देवता का 1 मिनट के लिए नाम ले लो। हम पंचांग क्यों बोलते हैं, आज के नक्षत्र का नाम क्यों लेते हैं। हम आज के नक्षत्र का नाम आज के दिन को एनर्जाइज करने के लिए लेते हैं, लेकिन उसके साथ जब हम प्रीवियस, आप कभी भी ध्यान से किसी पंडित को सुनना जो पंचांग पढ़ता हो सुबह, वो पता क्या बोलेगा, वो आज की तिथि बोलेगा, वार बोलेगा, आज का नक्षत्र बोलने से पहले ये बोलेगा कल नक्षत्र ये था, आज नक्षत्र ये है। ध्यान से सुनना, अगर वो ज्ञानी पंडित है, वो कल का नक्षत्र का नाम इसलिए ले रहा है ताकि आज के नक्षत्र को ब्लेसिंग मिल सके। ये बहुत डीप साइंस है। इसको 99% एस्ट्रोलॉजर्स समझ ही नहीं पाते। दे डोंट टच दैट लेवल। थिंक अबाउट टुडे इज सैटरडे। हाँ, व्हाट नक्षत्र इज टुडे? वृश्चिक। व्हाट नक्षत्र विल बी टुमारो? Adra is related to Rahu. How many people will go on weekend today in a bar or in a party in the evening today? Tell me, Saturday night. आपको पता है आज जो लोग खाना खाना चाहेंगे ना, वो मंगल से रिलेटेड नहीं है। वो किससे रिलेटेड है? राहु से रिलेटेड है। बात याद रखिएगा।
हाँ, बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और कल जब राहु का नक्षत्र आएगा संडे, तो राहु के बाद अगला कौन है? बोलो बोलो। Jupiter. Jupiter. जुपिटर। Jupiter. जुपिटर, हाँ। Yeah. तो संडे आपका मन करेगा कि आप मीठा खाएं, आपका मन करेगा घर बैठ के, आप बोलोगे, पत्नी को बोलोगे हलवा पूड़ी बन रही, थोड़ा हलवा बना लो, थोड़ी खीर बना लो, या बाजार से कुछ मीठा ले आते। आप देखना, अगर आप नक्षत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, आप इस कुदरत को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, आप देखना आपका मन, चाहे आप अपने आप को रोक लो। अब स्नेहा जैसे फिटनेस फ्रीक जो लोग हैं, इनके सामने गुलाब जामुन रख दो, बोलो साथ में हम देंगे आपको 5,000 रुपया, ये बोलेंगे 5,000 नहीं लेना, हमने नहीं खाना। शी विल नॉट ईट इट, आई नो, दे विल नॉट, चाहे संडे है चाहे मंडे है। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या है कि आप अपनी नक्षत्र की एनर्जीज को चंद्रमा से कंट्रोल कर सकते हो, मून से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये चंद्रमा से अगला नक्षत्र है। प्लीज ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये चंद्रमा से अगला नक्षत्र है ना, जहां आपका चंद्रमा है उससे अगला नक्षत्र है। चंद्रमा से अगला नक्षत्र कौन कंट्रोल कर सकता है? आपके जन्म नक्षत्र को किसने कंट्रोल किया? आपसे पिछले वाले नक्षत्र ने। आपका मन सबसे बड़ी पावर है। आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे तो करोगे। राहु जो है ना, राहु बिल्कुल जंक फूड है ही है। राहु जितना भी बाहर का खाना ना, अजीब सा खाना जो आप खाते हो, वो सब राहु है। राहु लव्स नॉनवेज। राहु को चिकन, मटन, फिश, मदिरा, ये सब बहुत पसंद है। राहु को अगर वेजिटेरियन भी खाना है तो उसको स्पाइसी चाइनीज फूड खाना है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको साउथ इंडियन खाना है, अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो तो आपको नॉर्थ इंडियन खाना है। दैट्स राहु। हटके जिनका राहु अगला नक्षत्र होता है, वो चाहे बियर बार में जाके शराब ना पिए, ले बियर बार में जाके वो एक मॉकटेल ही पी ले, लेकिन उनको बियर बार में बैठना पसंद बड़ा अच्छा लगता होगा, किसी बार में बैठ के नॉन अल्कोहलिक चीजें पीना। मैंने ये भी देखा है। और देखो चॉपसी डोसा, सी व्हाट अ डोसा यार, दिस इज अमेजिंग यार। I mean you cannot deteriorate a dosa more than calling it a chopsy dosa. I mean you've shattered the dosa yaar. Imagine the chopsy dosa yaar, or a Maggi dosa. How badly you've destroyed a dosa. That's Rahu. Huh? That's Rahu. If there is this Jupiter, then they'll say, okay, put a gulab jamun in a dosa and give it to me. You know that there are people in Delhi and Mumbai, you know, they sell these, like a vada pav, they're selling gulab jamun and pav. You know, they're just putting gulab jamun in a pav and then giving to people, and people are eating. It is very tasty. I tried it. You know, being an astrology student, I'm an astrology student, right? I'm not a teacher. I just give my knowledge. I transfer my knowledge. You call me guru because I'm little advanced than you. There's not any major difference between you and me. It is little that I'm little ahead in the journey. You're just behind me. That's it. Oh my God, they're giving Maggie with Ruafza now. Yes. Okay. There's a question. See, if there is a planet in the next nakshatra of your Janam nakshatra, then that planet will also influence your taste. Okay. Remember this. If there is a planet which is just next to your Janam nakshatra, then that planet will also influence the taste. And if there are two planets, then what will happen? Then you are in a conflict. ये खाऊं के ये खाऊं, पीऊं के ना पीऊं, खाऊं के ना खाऊं, junk खाऊं के healthy खाऊं. It's always a conflict which is happening. So you know, when you have such combinations, your whole life is a conflict. You know, when you have two planets in a single nakshatra,
In Jyotish, it is known as Graha Yuddha. क्या बोलते हैं उसको? Graha Yuddha. Why? Because these two planets are trying to control over a nakshatra, and they keep fighting with each other. When you have sun and moon, like Amavasya dosha, sun and moon in same nakshatra, close conjunction, Amavasya, the entire life is a conflict. The mind is a conflict. There is a stress all the time in the mind. Saturn, Jupiter, you have. So Jupiter is meetha, and then Saturn is namak wala. So such people like something which is sweet and salt. And Chopsy is like that. Chopsy is sweet and salt. Oh my God. Can you believe this? Mars and Jupiter, Venus, you need to take care of the sugar intake. I'm telling you. आप पागलों की तरह मीठा खाओगे? Yes, sir. बचपन I'm a में diabetic. You are diabetic. I'm telling Yes, you. sir. पता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर हमें किसी को डायबिटिक देखना हो ना तो हम जन्म नक्षत्र से आगे देखते हैं उसकी क्या फूड हैबिट्स है कि भाई वो हमें कह रहा है नो 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 आई डोंट ईट मीठा आई एम लाइक दैट चुप बिल्कुल चुप एकदम चुप हो जाइए आप झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर के साथ आप छुपके जो गुलाब जामुन मंगवा रहे हो स्विगी से हमें सब पता है वी नो इट और ये डायबिटिक भी ऐसा इंसान डायबिटिक है जो गोली खा लेगा और अपने शुगर की नीचे होने का इंतजार करेगा जैसे ही नीचे हुई आप कुछ खा लूं मीठा रोटी ना खाऊं कुछ मीठा खा लूं सी दीप्ति स्वीट एंड सॉल्ट she would love Jupiter and Saturn is sweet and sour कुछ खट्टा मीठा 50-50 इनको बिस्किट्स भी लेने होंगे ना चाय के साथ दिल से 50-50 हाँ दीज आर द पीपल जो आम पापड़ के ऊपर नमक लगा लगा के खा रहे होते हैं they put salt सर जब गोलगप्पे वाले भैया गोलगप्पे डालते हैं तो मैं कहती हूँ थोड़ी मीठी चटनी डाल दो हाँ खट्टा मीठा मिक्स करके दो आप उनको that's Saturn and Jupiter what about Venus nobody talks about Venus what is Venus पे कैसा खाना पसंद है Bakery items. so, Venus का सबसे बड़ा जो खाना है जो सबसे ज्यादा Venus वालों को पसंद होगा that is curd you know or yogurts flavored yogurts they would love yogurts on the same time Venus is all about exotic foods like bakery is a very exotic food वो थोड़ा सा खाएंगे लेकिन उनको फूड एग्जॉटिक चाहिए कौन सा चाहिए काफी अच्छा डेकोरेटेड सा एग्जॉटिक सा खाना यू नो जस्ट लाइक वो गॉर्डन राम से बना था ना एग्जॉटिक फूड्स हाँ सॉर्बेट यस एग्जॉटिक फूड्स बेकरी दही कर्ड जिसका बेस कर्ड से हो यस इवन एग्स they would love luxurious food you know any food which contains luxury sorry that's the food they like for sun okay tell me what about the food of the sun को कैसा खाना पसंद है just guess if you have sun as the next nakshatra what kind of a food Sattvic, okay. What else? Spicy food, hot food. First thing, sun, they will never like any cold food. You know, they would need, if you prefer a cold coffee or a hot coffee, they'll say, okay, I want a hot coffee. I don't want a cold coffee, first of all. Second thing, you know, sun is atta, gehu, you know, anything that has fiber and gehu. They would love food items made of jaggery, right?
they will always prefer a brown sugar than a white sugar. You just keep two sugars in front of them. Ask them which sugar you want to pick up for your hot coffee. They will always pick up a brown sugar. They will never pick up a white sugar. Never. No. Just give us a brown sugar. That's more tasty. It's like roasted. I just love that. Tanned sugar, you know, tanned sugar. That's sun. That's sun. They would love, you know, chapati, roti. They will eat all the snacks in the world. They'll fill up their stomach and they'll ask you a small question. Khana kahan khayenge? I said, oh my God. I mean, are you insane? I mean, you had 4 snacks, you had 3 drinks, and you're about to pour the 4th one, right? And now you're saying, let's order a dal makhani, shahi paneer, and a lacha paratha. Let's do that. And भैया रोटी एकदम गरम लाना, घी लगा के लाना और एकदम कड़क रोटी लाना, थोड़ी कच्ची नहीं होनी चाहिए. लाओ भैया लाओ. And those people will also eat. Coffee is Rahu. Coffee is absolutely Rahu. When you like coffee, the day you put coffee, you know what? The color of the coffee is the exact color of Rahu. Remember this. The exact color of Rahu is the color of coffee. अच्छा, एक चीज और नोट करना आप, जब आप बहुत ज्योतिष करने लग जाओगे ना, अगर आप दिन में मान लो 10 कंसल्टेशन करने लग जाओगे, आज तो कुछ और ही मंथन हो गया, यमराज जी ने हमें किसी और ही जगह पे हमें डाइवर्ट कर दिया, भरनी तो बीच में ही रह गया. यू पीपल आर क्रेजी, यू पीपल डाइवर्ट मी, यू आर डाइवर्टर्स, यू नो, यू सीरियसली डाइवर्ट मी. नाउ तो अगर आप बहुत ज्यादा ज्योतिष करने लग जाओगे ना, आपको कॉफी पचनी बंद हो जाएगी. Coffee will start giving you a lot of acidity. देखना, when you do 10-15 consultations, आप कॉफी सिप ही नहीं कर पाओगे. लेकिन जब आप जिम जा रहे हो ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करना मंगल और राहु का ब्रैकेट है. क्यों? क्योंकि आप दिखावे वाला वर्ल्ड है वो. When you make your body, you are beautiful from outer. When you are spiritually inclined, you are beautiful from inside. ये फर्क होता है, ध्यान रखना ये बात. तो जब हम जिम जा रहे हैं ना, तो हम राहु के रडार में हैं, हम राहु के एलिमेंट में हैं. बिकॉज राहु wants to live in the outer world, not in the inner world. So बॉडी अच्छी बनाना is outer world. जो लोग स्टीरॉइड्स लेके बॉडी बनाते हैं, जो लोग अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लेकर आते हैं, राइट, उनको ये नहीं है कि मेरी शेप कैसी होगी, लेकिन मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, मेरे बॉडी में जान चाहिए. कुछ लोग इसके लिए भी जिम जाते हैं कि मुझे अपनी बॉडी में जान लानी है, मैं दिखूं चाहे जैसा मर्जी. आई डोंट केयर कि मुझे 8 पैक्स निकालने हैं, 6 पैक्स निकालने हैं. आई डोंट केयर, बट आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव टू बी स्ट्रेट, आई हैव टू बी गुड लुकिंग. वो एलिमेंट जो है ना, उनको कभी कॉफी नहीं पचेगी. दैट्स जुपिटर. जिनको एकदम लीन रहना है, जिनके 6 पैक्स होने चाहिए, एकदम कट्स होने चाहिए, दैट्स राहु. वो जिम जाने से पहले भी कॉफी लेंगे और जिम से आके भी कॉफी लेंगे. Who wants to look sharp, right? वो राहु का एलिमेंट है. Okay, that's Rahu. And what is tea? What is tea? Come on, what is tea? Tea is Ketu. Okay, tea is not Rahu. Okay, tea is Ketu. Chai is Ketu. That is why आप किसी भी ऋषि महात्मा के आप मंदिर में चले जाइए, किसी भी आप भवन में चले जाइए, किसी के आश्रम में चले जाइए, वो आपको कौन सी चाय जरूर पिलाएंगे. अरे भैया चाय पी लो, चाय का स्टॉल लगा हुआ है, चाय चाय चाय. सी, चाय. तो ये चीजें जो है आपको ज्योतिष में नक्षत्रों के बेस पे पता लगती हैं.
कौन सा ग्रह रह गया? मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, चंद्र हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, बुध भी हो गया, चंद्रमा लैक्टोज, एनी लैक्टो, यू वुड लव लैक्टो, सिंपल। तो मुझे क्या पीना है? दूध पिला दो जी, थोड़ा जा एक गिलास दूध दे दो साथ। दैट्स चंद्र। हाँ, that's the beauty of the Chandra Nakshatra. Jupiter, Ketu you have done. Okay. Ketu, if you are non-vegetarian, is also red meat. Ketu, you ask a person chicken or mutton, he will say mutton. He will never say chicken. Ask a Rahu boy, chicken or mutton, he will say chicken. Okay. Anything above that, anything above chicken, mutton, any foreign, like you go to China, it's all Rahu. Veal or beef is also Rahu. But Ketu can be detachment. Also, kuch bhi de do. No. Ketu is not kuch bhi de do. He's a Asura. Remember this. He's not going to settle in kuch bhi de do. Either he wants everything, wants nothing. कुछ भी नहीं चाहिए. कुछ भी नहीं चाहिए मुझे. कुछ भी दे दो नहीं. कुछ भी नहीं चाहिए. I need a बिल्कुल isolation. कुछ भी नहीं चाहिए. खत्म. भूखे मरेंगे. That's Ketu. Fasting is Ketu. Fasting is Ketu. I don't want anything. जिनका अगला नक्षत्र केतु होगा ना, उनको फास्ट के लिए बड़ा पैशन होगा. वो रख पाए कि नहीं रख पाए वो अलग बात है. But they'll have passion for fasting. They will always, if you are an astrologer, you will always. No. Ketu is a sattvic food only if the placement of Ketu is good. If the Jupiter aspect on it. Otherwise, Ketu को तो आप दिन में 3 बार eggs खिलाओ. Morning, you give them omelets. In the evening, you give sunny side. And in the night, you give them boiled. उनकी सब्जी बनाओ, अंडा भुर्जी बनाओ, अंडा करी बनाओ, साथ में रोटी दो, उनको अंडे खिलाते रहो. That's good, but that's good if you don't have tea. But then start having Vedic tea. It will enhance your spirituality. Everyone, start having Vedic tea. Have a Vedic tea. Vedic tea will enhance your spirituality to the next level. Have Vedic tea. It's very important to have Vedic tea if you do occult sciences. Vedic tea is a tea that you get. I bring it from Haridwar. Okay, there is an ashram, a huge ashram in Haridwar, which is known as Tapovan. Right, बहुत बड़ा आश्रम है. उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर. वहां से वैदिक टी मिलती है. उसके अंदर जड़ी बूटियां हैं, उसके अंदर अर्जुन छाप है. हाँ, पतंजलि के पास होगी, आई नॉट श्योर, बट मैं तपोवन से लाता हूँ. उसमें अर्जुन छाप है, अश्वगंधा है, तुलसी है. राइट, उसमें बहुत सी चीजें हैं, 10-15 इंग्रेडिएंट्स हैं. सो मॉर्निंग एंड इवनिंग, earlier I used to start my day with the tea, with the masala tea, but then that was not good, giving me a lot of acidity. और उसके साथ थोड़ा सा कार्ब्स भी हो जाता था. कार्ब्स में जैसे आप एक बिस्किट ले लिया या आधा टोस्ट ले लिया, so that I felt that it is spiking my sugar. So I said I'll not have this. I said, Nitika, we need to stop it. Yeah, this is not done. Right, I don't want to fill my stomach with carbs in the morning. Early in the morning, when the metabolism is so low, I don't want the carbs. So we started with the Vedic tea. And morning Vedic tea, and after dinner also, if you take a cup of Vedic tea, it is very good. It works like an aspirin. How does it work like an aspirin? That it doesn't allow the clot, of the blood to go in your heart. So it works like that. So you can order it. Even Vedika Kada is available online. It is like a similar thing, but the taste is not good. Next time I go to Haridwar, I think I'm planning to go to Haridwar in November.
So Sudhanshu ji, I'll get some, some Vedic teas for you. I'll order. If some किसी और को चाहिए होगा मुझे मैसेज कर देना. I'll give you a intimation that I'm going to Haridwar, Rishikesh, and जिसको चाहिए होगा मैं गाड़ी भर के ले आऊंगा, नमन शिप कर देगा. ठीक है? No problem. It's a very tasty one. It is very good one. Okay, so you can go and get it there. Yeah, Dabur Vedic tea is also there. But स्नेहा प्रॉब्लम पता है कि इनका टेस्ट नहीं अच्छा. जो मैं वैदिक टी पीता हूँ उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है. आई मीन यू जस्ट लव इट, सो वो एक चीज है. और जब आप पानी को उबाल रहे होते हो तो उसमें थोड़ा आप अगर इलायची डाल दो या सौंफ डाल दो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है इस वैदिक टी का, राइट. एंड इट इज इन अ पाउडर फॉर्म. सो यू हीट अप वाटर एंड टेक अ थोड़ा सा पाउडर डाला, उसको घुमा दिया, बस डन, यू रेडी टू हैव इट, राइट. जस्ट लाइक यू डू इट विद अ कॉम्प्लान और अ बॉर्नविटा. सो उसमें इजीली हो जाता है, right? So we'll get these for you if you want. It's a very good one. Okay, so that's Ketu. Okay, and so tikha khana is related to obviously to sun, Surya, as well as it is also related to Rahu. Okay, meetha is Jupiter. Okay, heavy food is Jupiter. Okay, Saturn जो है ना, Saturn is like very raw खाना, उबला हुआ चावल, तरी वाली मच्छी, रोटी, दाल, बहुत ज्यादा. एंड ऑल्सो यस, तीखा इज देयर विद द लेबर. एंड ऑल्सो देसी घटिया शराब. जो घटिया शराब है ना, जो लोअर क्वालिटी की शराब है, दैट इज ऑल्सो द कैटेगरी ऑफ सैटर्न. दैट्स देयर. Yeah, they see a poor person's food is actually Saturn's खाना. और एक बात बताऊं, अगर आपको लीन रहना ना अपनी बॉडी, if you want to be lean, you have to go for Saturn's food, raw food. और Saturn का एक और बड़ी अच्छी स्पेशलिटी होती है, Saturn का जो खाना है that will always be a fresh made food. मतलब आपने जो डेली परचेज किया, आप लेबर को देखो, वो रोज 10 रुपए का घी, 10 रुपए का तेल, आधा किलो चावल, 100 ग्राम दाल, इतना ही लेके जाएंगे जिनको शाम की कमाई में बचा. और यहां से हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का नक्षत्रों के बेस के ऊपर एक और रूल पता लगता है. पता क्या रूल है? मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं. शायद जो लोग फिटनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको ये सीक्रेट पता हो कि नहीं हो, आई हैव नो आइडिया, लेकिन एक श्योर सीक्रेट है, एक श्योर सीक्रेट है. इफ यू कैन ईट puri and aloo every day, every single day you can eat puri aloo. Like अगर आप फौज में जाओ, फौज का जब खाना बनता है ब्रेकफास्ट में, चाहे आप बॉर्डर पे हो, चाहे आप कैंटीन में हो, वो आपको सुबह पूरी आलू देंगे, पराठा देंगे, और आपके मन में आएगा कि आप फौजी की तरफ देखो, वो कितना लीन है, राइट. दे आर वेरी लीन. किसी भी फौजी की कमर 27, 28, 29 से ऊपर नहीं होती, मैक्सिमम 30. चेस्ट चाहे उनकी 40, 42, 45 तक जाए, 46 तक जाए, उनकी कमर 32, 30 से ऊपर नहीं जाएगी. आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूं सैटर्न का. अगर आप आटा को आप डो तैयार करते हो, जब आटा गूंथते हो आप, अगर आप 200 ग्राम 100 ग्राम आटा लो, उसको अभी गूंदो, अभी पूड़ी बना दो और अभी खा लो, वो आपको कभी फैट नहीं करेगी. अगर आप फ्रिज में से रात का आटा निकालते हो, आप उसकी रोटी बनाते हो, पराठा बनाते हो, उसको पूड़ी बनाते हो, दैट इज गोइंग टू क्रिएट फैट, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम पैदा होता है जो आपकी डाइजेशन एंजाइम के साथ मैच नहीं करता है. फ्रेश फूड जो एकदम फ्रेश बनाया आपने, चाहे वो तला हुआ हो, चाहे वो किसी भी तरह का हैवी फूड हो, उसमें डाइजेशन आपकी इजी रहने वाली है. और जो खाना डाइजेस्ट हो गया वो कभी फैट नहीं करेगा. खाना वही आपको फैट करेगा जो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो आपकी बॉडी ने होल्ड कर लिया. इज दैट सिंपल इज दैट. सो अगर आप जैसे ब्रेड खाते हो, इट्स वेरी डेंजरस. आप कोई भी बेकरी प्रोडक्ट खाते हो, दैट इज वाई जब आपको फैट लूज करना है, वो सबसे पहले कहते हैं बेकरी छोड़ो. बेकरी छोड़ने का मतलब है कि कोई भी ऐसा खाना जो फ्रेश ना हो, आप उसको छोड़ दो. बिस्किट्स, नमकीन, they are not fresh foods. They have
things that are put in the food जो उसको उसकी shelf life को बढ़ाती है. So if you have a food which has a shelf life, is the most pathetic food to eat. Just like whiskey or any alcohol, उसकी shelf life है ना, जितनी पुरानी है, that is why it increases fat in your body. कोई भी आपने कोई चीज तोड़ी और आपने बनाई और वो खा ली, चाहे आप उसको तल के खा जाओ, it is never ever going to create. That is why all comfort foods, you know, all junk food, they are already made. Imagine जो आप मटर लेके आते हो, फ्रोजन मटर, क्या लेवल है, फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रोजन मीट, फ्रोजन फूड, it is total fat. That is why more than 70% of the American budget is based on pharmaceuticals and supplements and products, and they are fat. That is not the food of Saturn. That's Rahu. Saturn is a fresh food. Right now you picked up, you made it, you ate it. So this was a surprise lecture. I think we spent 1 hour and 10 minutes on this, and ये आज भरनी से it just became a surprise lecture of food on Nakshatra. I hope you enjoyed it. Yes, no, maybe you loved it. Yeah. So ये आज बिल्कुल ही बदल गया. Okay, so आज so we'll continue Bharni. Sometimes the days are like that. Sometimes the days are, you know, this Mrikshira Adra thing concept is always research and development. So आज एक research and development हो गई, like an R&D kind of a thing. Yeah, Mrikshira Manthan of food, research of the food. Right now you know the taste buds ना. आप जितने मर्जी आप कोई कह ले कि मैं खाता नहीं, मैं पीता नहीं, मैं ये नहीं करता, आपको सब पता है ये क्या खाता है, क्या पीता है, क्या नेचर है, सब you know. Okay, चलो इसको यहीं खत्म करते हैं.